हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। प्लस टू में इंटीग्रल चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 पर हमने 16 लेक्चर दे दिए हैं इंटीग्रल पर। अब ये 17th लेक्चर है ओनली ऑन इंटीग्रल, 17th वीडियो। तो ऑन इंटीग्रल वी हैव रीच्ड अप टू on to 7.6 एक्सरसाइज, यानी बिफोर 7.6 ऑल एक्सरसाइजेज वी हैव डन। हमने सब कंप्लीट कर दिया है इससे पहले की सारी एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें 7.6 में इंटीग्रल बाय पार्ट इज गोइंग ऑन। ओके, u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन एंड आई लेट के अकॉर्डिंग सब डिसाइड किया जाता है फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा। आई लेट के अकॉर्डिंग जिसका भी ऑर्डर पहले बनेगा वो फर्स्ट होगा। आई मीन्स इनवर्स, आई लेट, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो ये जो ऑर्डर है इनमें जो भी इनमें से फर्स्ट होगा वो फर्स्ट बनेगा। ठीक है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट है, इधर से उधर तक एंड तक सेकंड हो जाएगा जो बाद में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो इस पर क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x इनटू sin x। अब ट्रिग्नोमेट्री एंड e पावर x एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो ये सेकंड हो जाएगा एंड दिस इज फर्स्ट। Okay, clear? Now let this question let I, and then according to question formula, you know integral of first into second dx is equal to first as it is into integral of second dx and minus integral all bracket and then derivative of first d by dx of first, ठीक है, and into integral of second and all again integral is all integral dx, ठीक है, and plus this formula we have to use integral by part. Here first sin x, so sin x as it is integral of e power 2x, e power 2x का इंटीग्रल, e power x का इंटीग्रल e power x, but 2x है इसका डेरिवेटिव बनेगा 2, तो डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव if it is real number। ठीक है बेटा, डायरेक्ट we can do by substitution है, तो डिवाइड बाय 2 will come, then minus all integral derivative of the first, derivative of first is sin x, sin x का derivative cos x, and integral of second e power 2x का इंटीग्रल, e power 2x divided by 2 and again this all dx, this plus integral constant done। Okay, now solution is continuous forward, simplify, so we take 1 upon 2 e power 2x into sin x minus integral, again here half out and again it is first trigonometry and it is second e power 2, again this formula repeated, minus half out from the whole and then first as it is cos x into
integral of e power 2x, again e power 2x divided by 2 minus integral of whole means that derivative of first derivative of cos x minus sin x derivative of cos x minus sin x into integral of e power 2x divided by 2 and whole bracket again into and plus. See this now, simplify this half e power 2x. Important question is sin x as it is माइनस हाफ इनसाइड कर देना, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो गया इस टर्म के लिए, माइनस माइनस एंड दिस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा एंड 2 टू 4 क्या बनेगा 1/4 e power 2x into cos x and minus 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 and minus and then integral of e power 2x sin x and then इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी 2 है तो 1/4 आउट ले लो, 1/2 की जगह 1/, देखो ध्यान से क्या किया हमने, ये एज इट इज ये 1/2 1/4 अब 1/2 1/2 यहाँ भी 1/4 आएगा, अंडरस्टैंड 1/2 दिस आउट एंड 1/2 फ्रॉम इनसाइड से है तो ये बन जाएगा 1/4 e power 2x into sin x. Be careful in the simplify and improvement. You have to observe here a question is repeated here. This question e power 2x into sin x dx. This is I. So this we can write here I minus I integral upon 4. ठीक है, an integral constant c, okay, and this as it is here common we can take, here common e power 2x common and upon 2 also common and then what we left here we left sin x in दोनों टर्म में कॉमन है and minus e power 2x common then cos x by 4 a common and then this minus this and this is our I. It is our I going on, ठीक है, then I or minus I by 4 plus I by 4, I plus I by 4 is equal e power 2x upon 2 bracket sin x minus cos x by 2 and plus constant. Then this LCM, then 4i plus I, 5i upon 4 is equal to e power 2x upon 2 common then sin x minus cos x divided by 2 and plus constant. Now this you see, okay, 4 multiply this side 4 c1 कर दो 4 c1, okay, 4 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड तो उसको c लिख दो, okay, and then I will be equal multiply by 4 and divide by 5 4 then 2 cancel हो जाएगा 2 to the 4 e power 2x upon 5, okay, and then sin x minus cos x divided by plus constant.
This is your I answer. Be careful like this question, important question. Okay. Next question. Yes, beta. Next question, question number 22. What is this? Sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, तो ब्रैकेट में एक फॉर्मूला बनेगा, इसको सिंपलाइज करेंगे पहले. तो लेट करेंगे इसके लिए. व्हाट वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू tan थीटा. लेट यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x. अब ये जो हमने राइट किया है, यहाँ हमारा क्वेश्चन विल रिड्यूस. ओके, अभी इंटीग्रल ना करें हम इस पर, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं फंक्शन को. तो साइन इनवर्स ये बनेगा आपको 2 tan थीटा अपॉन x is tan थीटा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. सिंपली ये पुट किया आपने. अभी इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फंक्शन को. तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. ये फॉर्मूला, using this formula here, okay, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. Then this is equal to sin inverse and sin cancel, then 2 theta, and theta original we can replace. What is original theta? By substitution is taken. So theta is equal to tan inverse x. So 2 tan inverse x. Now easy to integrate. Now question, integral of sin inverse 2x upon 1 plus x square dx will be equal integral of this simplest form is 2 tan inverse x. Integral of 2 tan inverse x dx. ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया. ओके, फंक्शन रिड्यूस इनटू simplest form. And how you will do? Take here into one by part. Okay, inverse trigonometry first and then the second. So by part this formula, then what will come? 2 out from the whole, and then first as it is tan inverse x as it is into integral of 1 x minus integral whole bracket square bracket, and then derivative of first derivative tan inverse x 1 upon 1 plus x square derivative tan inverse x into integral of that x into what bracket dx plus constant. This now simplify forward. What will come? 2 out and tan inverse x into x. Okay. X into tan inverse x into tan inverse x minus integral
integral of x upon 1 plus x square integral. Take 1 plus x square is equal to t. Substitution. 1 plus x square is equal to t. Then derivative 2x dx will be equal to dt. Okay. Then use here this 2 inside ले लो. तो 2 यहाँ multiply कर दो और 2 वहाँ कर दो. ठीक है बेटा. 2 this and 2 here. Then integral 2x upon 1 plus x square dx. By this substitution, what will come this? 2x into tan inverse x minus this substitution 2x dx dt. Integral of dt by this substitution upon 1 plus x square is t. Then this implies this will be log t. Then we can write this 2x into tan inverse x minus log t and t means original 1 plus x square. I written directly. Plus 1. This is your answer. Okay, beta? Done. Next question, important question MCQ. Yes बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 MCQ है ये क्वेश्चन दोनों, लास्ट के दोनों क्वेश्चन 23 and 24. Okay, now this question x power 2 into e power x cube dx. A option, B option, C option, D option. We have to choose which is correct. Now here solve करके देखना है, तो इसमें वही एक्सपोनेंशियल सेकंड and this is first. Okay, then solution first as it is into integral e power something and derivative of x cube 3x square. We can't take substitution, we have to do first substitution. Okay, take x cube is equal to t. Let x cube is equal to t by substitution. This implies taken derivative both sides. 3x square dx is equal to dt. Then x square dx, x square into dx will be equal to dt upon 3. Substitute these, question will reduce into new form. X square dx is dt and by 3, 1 upon 3 out, and e power, then e power t, x cube is t and x square into dx is dt by 3 and by 3 out. So this new question, then integral easy, 1 upon 3 e power t का integral e power t with respect to this e power t का derivative 1, this answer only plus constant and t replace original, then this will be 1 upon 3 e power t. T means x cube. E power x cube plus c. 1 upon 3 e power x cube plus c. A option. ठीक है? B wrong, C wrong, D wrong. So option A is correct. Option A correct. Okay, done. Similarly, next question. Yes, beta. Last question, 24 MCQ. Question is integral of e power x sec x into 1 plus tan x dx is equal to A option, B option, C option, D option given. So now here, which is the correct? Now solve here.
मल्टीप्लाई इनसाइड दिस e पावर x एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाएगा sec x into 1 sec x, ओके, एंड प्लस sec x into tan x, sec x tan x, ये फॉर्मूला बन गया, ओके, sec x into tan x स्पेशल फॉर्मूला कौन सा, which formula this is the formula of this e power x into fx plus f dash x, any derivative and the function both sum with integral with into dx. This formula it is equal to e power x and function fx. General formula for every question is like this question. Addition में derivative and the function both in the sum. So see here, fx is equal to sec x, and f dash derivative of this sec x का derivative भी now sec x tan x, sec x into tan x we know this. So use this formula, it means direct by this formula this answer e power x into fx. Fx is what is e power x, fx is sec x, e power x sec x plus constant. This which e power x sec x e power x sec x constant. B option is at option B is correct. Done. Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and share the video to that student which are in your contact and studying in class 1 class 2. You should send that video please. It is my request to all of you who are watching, see, okay, not only see, open the video and then watch, like, share, okay, and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. Thank you.